Okay, so the recording has started, and two students have put their attendance as well, Kadambari and Ayush. Snehal, you need to write your name once again, the way these two students have written. Okay, so I'm joining from a different account. Okay, yeah. Hello. All right. I think I'm audible from this account as well. Okay. So I will be logged in on that account because maybe few students might require permission. So I will be logged in there as well and here as well. So I think there is no issue with the voice, and I'm sharing my screen now. So please let me know that my voice is clear and my screen is also visible to you. Okay. Is it visible, students, for everyone? Yes, no, maybe. Okay, so we have confirmation from the two students. That means it is visible. All right. So लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड अबाउट टैक्सेस, मतलब टैक्स एग्जैक्टली होता क्या है, किस टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, हु पेज द टैक्स एंड व्हाई टू पे द टैक्स, दैट थिंग्स, दोज थिंग्स वी आर येट टू लर्न. अभी हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, राइट? वी जस्ट नो there's a thing called tax and it has to be paid by somebody or few of the people or the few of the professionals, right? Okay, so let's continue with our chapter. So next point is levying of taxes or taxation. So I will read this paragraph, you just listen to it and then I will explain this. The government makes many plans for the development of the country. It requires large amount of money for implementing these schemes. By charging different types of taxes, the funds are generated for implementing of these schemes. Okay, so first thing is अभी हमें समझ में आ गया कि why the tax is there, मतलब टैक्स की जरूरत क्यों है, टैक्स क्यों लिया जाता है, why is it so? Because हमारा जो गवर्नमेंट है उसे गवर्नमेंट हैज टू डू मेनी डेवलपमेंट स्कीम्स और मेनी वर्क्स, राइट? मतलब जो हमारा बहुत सारी चीजें हैं ना जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, सो गवर्नमेंट नीड्स मनी फॉर दैट, राइट? सो दिस मनी कम्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से आता है ये सब पैसा? दिस मनी कम्स फ्रॉम टैक्सेस, मतलब जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, that is collected, it goes to the government and government uses that money फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. रोड हुए या फिर कई सारी स्कीम्स है, राइट? गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें कि गवर्नमेंट हैज टू पे मनी एंड वन ऑफ देम इज लाइक यू नो कोविड वैक्सीनेशन. अगर आपको पता होगा कि everybody, most of us have, you might not have taken because you are below 18 मे बी, राइट? आपने अभी तक शायद वैक्सीन नहीं लिया होगा, लेकिन मे बी आपके घर में मम्मी डैडी है या फिर दादा दादाजी है, अ, दादी जी या फिर दादाजी है, सो दे माइट हैव टेकन वैक्सीनेशन एंड आई एम श्योर कि ओके विनीत हैज टेकन, ऑलराइट. ओके, सो मोस्ट ऑफ देम हैव माइट हैव टेकन फॉर फ्री, मतलब बोलते हैं ना कि या बोथ, ओ बोथ डोजेस, ग्रेट, ठीक है. सो सो ये जो पैसा है, वी डोंट पे मनी फॉर दैट, राइट? वैक्सीन के लिए वी डोंट पे मनी, सो हु पेज द मनी? हु पेज द मनी? सी, अगर वैक्सीन बनाना है सो इट टेक्स टाइम एज वेल एज मनी, right? There's one company so that makes vaccine, right? So somebody has to pay that money to the company, right? So the government does it. So कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास पैसा? ये so गवर्नमेंट के पास जो पैसा है that comes from taxes, ठीक है? या सो यूटिलिटी ऑफ टैक्सेस. अभी टैक्सेस कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं? सो फर्स्ट थिंग इज प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक अम्यूनिटीज. सो प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर माने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं या फिर बस स्टेशन या फिर मतलब जहाँ पे भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है,
जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सो दैट थिंग कम्स अंडर दिस, राइट? Okay, then implementing various welfare schemes. So there are several schemes that are run by government, and government needs money for that. Then we have implementing schemes of development and research in various fields, maintaining law and order. मतलब जो अभी हमारा पुलिस फोर्स है या फिर मिलिट्री है या फिर ऑल द थिंग्स, मतलब कोर्ट्स है, सो अभी जो पुलिस फोर्स है, गवर्नमेंट नीड्स टू पे सैलरी टू देम, राइट? गवर्नमेंट पे सैलरी ना, सो वो पैसा कहाँ से आता है? दैट कम्स फ्रॉम टैक्सेस, राइट? सो एवरीथिंग गवर्नमेंट स्पेंड्स, मतलब गवर्नमेंट जो कुछ भी स्पेंड करते हैं, सो दैट मनी इज ऑफ टैक्सेस। ओके, जो हम टैक्स पे करते हैं, सो उसका ही पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करता है, राइट? After that, giving aid to people affected by natural disaster. Now let us suppose there is one natural disaster, और मतलब अगर कहीं पे आता है जो 2013 में आया था केदारनाथ में, right? There was a natural disaster there, floods were there, I think, or landslide, and there were many things, heavy rains and all, right? So उस कंडीशन में गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड हेल्प टू दोज पीपल, मे बी उनको रेस्क्यू करना हुआ या फिर प्रोवाइडिंग देम द शेल्टर और द फूड और जो कुछ भी चीज़ है, सो इट इट नीड्स मनी, राइट? सो गिविंग एड टू पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर. Then last one is defense of the country and its citizens etc. As I discussed कि डिफेंस पे भी पैसा खर्च होता है। अभी हमारा डीआरडीओ है जिसमें कि कई सारे रिसर्चेस चलते हैं, या फिर जो मिलिट्री है, आर्मी फोर्सेस है हमारे, सो these are defense of the country, right? So government has to spend money on that as well. Then types of taxes. There are two types of taxes. First one is direct tax and second one is indirect tax. So taxes which are paid directly by the taxpayer are called direct taxes. So example of direct taxes are income tax, wealth tax and professional tax. Okay. And if we talk about, sorry, if we talk about indirect taxes, so taxes which are not paid directly by the taxpayer are called indirect taxes. For example, central sales tax हुआ, या फिर value added tax. Then we have service tax, excise duty, customs duty, etc etc. So we'll, sir me left होते हैं कारण माझं city. uh oh, okay Snehal, no worries, yeah, you can leave, no problem. Yeah, okay, so let's continue. So these are the types of taxes. So we'll learn in details what are these taxes, मतलब इनका uh, किस तरीके से, या फिर what exactly is that, ठीक है? So types of taxes listed above are in accordance with the existing tax structure. So project is obtain more information about different types of taxes from employees and professionals who pays taxes around you. ठीक है? So first one we have to learn is income tax. So if the income earned in India by an individual, institute or authorized industry exceeds the limit specified under the Income Tax Act, income tax is levied on it. So in this chapter we shall consider only those taxes which are to be paid by individuals. Income tax is levied by the central government in India, and income tax is levied under the following two acts. Okay, so first of all, income tax किस किस पे या फिर किस किस को पे करना होता है? Income tax has to be paid by the individuals, institutes and authorized industries. So when they pay these taxes, if their income exceeds the limit specified under इनकम टैक्स एक्ट, मतलब क्या है कि हर किसी को ये टैक्स पे नहीं करना है। ओके, सो देयर इज वन लिमिट, मान लो कि उस लिमिट से ज्यादा अगर कोई भी इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी आदमी या फिर कोई भी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूट या फिर एथोराइज्ड इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं ना, सो इफ दे अर्न above that limit, for example, if the limit is 100 rupees, for example, okay, it's not the exact figure, लेकिन मान लो कि 100 rupees is the limit that has been set in the income tax act. Okay, so if somebody earns around 120 rupees or 130 rupees,
So clearly that person or that industry or that institute is exceeding that limit, मतलब लिमिट से उसका इनकम जो है वो ज्यादा है, so then he or she or that institute has to pay that tax. ठीक है. If the income is below that limit, let us suppose income is 90 rupees or 80 rupees, then that person or that industry or whatever, they don't have to pay tax. So it is as simple as that. Now next thing is, अभी इस चैप्टर में वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन टैक्सेस पेड बाय इंडिविजुअल्स, मतलब जो इंडस्ट्रीज टैक्सेस पे करते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट्स टैक्सेस पे करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट, वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द इंडिविजुअल्स. ठीक है. सो इनकम टैक्स इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो हमारे इंडिया में दो टाइप्स के, या फिर आई वोंट से देयर बट द टाइप्स, बट एक्चुअली दिस इज व्हाट इट इज, राइट. एक स्टेट गवर्नमेंट होता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है. सो जो ये टैक्सेस है, दीज आर इनकम टैक्स, पर्टिकुलरली जो इनकम टैक्स है दैट इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. सो इनकम टैक्सेस आर लेविड अंडर फॉलोइंग टू एक्ट्स. सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 which came into force on 1st of April 1962. So the act passed every year by parliament, which makes financial provisions. So every year, sometime in February, the finance minister presents the budget for the next financial year. It has proposals for the income tax rates. Once parliament passes the budget, the proposed rates become applicable in the following year. Income tax rates are fixed every year in the budget. Okay, so what we got to learn कि हर साल फरवरी के महीने में या फिर फरवरी के महीने में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, he or she presents the budget, and that budget is passed in the parliament, and that is applicable for the following year. ठीक है. So can anybody tell me who's our finance minister currently right now? Who's our finance minister? Okay. Who is our finance minister? It's Nirmala Sitaraman. Very good. Yeah. So she's our finance minister. Okay. So it's February month only, right? So जो हमारा बजट है वो अभी, मतलब they have presented budget for this year or not? अभी तक हुआ है या फिर नहीं है बजट डिक्लेयर फॉर दिस ईयर? अभी हमने पढ़ा ना कि फरवरी के महीने में ही होता है. ओके. कादम्बरी ओनली नोज. Yeah, it's declared, right? It's declared, it's already declared. Yeah. So according to, मतलब बजट में जो बताया जाता है उस तरीके से टैक्सेस पे करने पड़ते हैं टू द इंडिविजुअल्स इन द नेक्स्ट financial year. Okay, so see, here are few terms, some income tax related terms. So an assessee. So what is an assessee? A person liable to pay income tax according to the income tax rules is termed as an assessee. मतलब जो individual who pays tax, so that person is called an assessee. So financial year is the period of 1 year during which the tax income, so the taxable income has been earned, is called the financial year. In our country at present, the financial is from 1st of April to 31st of March. So financial year क्या होता है कि it's from 1st of April to 31st of March, and जो भी finance related जो calculations है, like the taxes we have to pay or all the things that are calculated by considering this as the year. मतलब January to December is not our, what we say, year for calculating taxes. It's 1st of April to 31st of March. ठीक है. Then assessment year, the financial year immediately following the particular financial year is called an assessment year. The tax payable for the previous financial year is called during the current year, and that is
the assessment year. So for example, let us suppose our financial year is from 1st of April 2016 to 31st of March 2017. So our financial year would be 2016-17, but the assessment year is gonna be 2017 to 18. Similarly अगर financial year 2017-18 है, so assessment year जो है वो 18-19 रहेगा, like this. Okay, so financial year जो है वो मतलब वो पहले आता है, assessment year is the immediate next year after that financial year. Okay, so then we have PAN or permanent account number. So I think all of you must be having your PAN card. If you don't have it, I'm sure everyone in your house or everyone in your family uh, must have issued PAN card, right? सबके पास PAN card रहेगा घर पर आपके. So do you have PAN cards? Your individual PAN cards? How many of you have? I think Vinith have. Dambari do not have PAN card. All right. Ayush also have PAN card. Okay. So yeah, I do also have PAN card. So the long form of PAN card is permanent account number. Okay. So why it is used? What is the use of this? So you might have wondered. अभी जिनके पास में PAN card है, they must be wondered, sir, we have ATM card. We use that to withdraw money, right? We go to ATM machine and we put this card in it, and then we enter pin and the amount and we get the money, right? But we have never used PAN card like that. मतलब where do we use that PAN card? राइट मतलब डोंट यू थिंक आप कभी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि ये एग्जैक्टली exactly कहाँ पे यूज होता है एनीबडी किसी को पता है कि ये कहाँ पे यूज होता है एनीबडी नोज और एनीबडी हैज यूज्ड पैन कार्ड इन अ मैनर कि मतलब अभी मुझे पैन कार्ड की जरूरत है एंड आई हैव टू टेक माय पैन कार्ड विथ यू आई गेस नो ओके इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डोंट वरी अबाउट इट इट्स ऑलराइट ठीक है सो even though you might not have used pan card as an ATM card but मोस्ट ऑफ मतलब कई सारी जगह पे you you need documents, right? For example आधार कार्ड एंड पैन कार्ड. So these two things are really mandatory, है ना? मतलब अगर आपको कोई भी let us suppose you have to take any policy or any loan or anything, मतलब जो where the documents are required. So which documents are mostly mandatory? Aadhaar card is the first one, and the second most important document we can say is a PAN card. Okay, PAN कार्ड की जरूरत पड़ती है. So it is a permanent account number. All right, so what is use of this? Let's learn, let's study. So on applying for it, every taxpayer get a unique 10 digit alphanumeric number from the income tax department. So first thing we should know is that PAN card is issued by or it is it is from income tax department. Okay, we are required to mention this number in many important documents and financial transaction as I told you earlier, right? So I don't know about current situation, but let us suppose if you had to withdraw 50,000 and above, then you cannot withdraw it directly. I guess you need PAN card along with it. Similarly for depositing the money, right? So the PAN card is necessary there. So use of the PAN, it is binding to write our PAN on the challan used for paying our income taxes to the IT department or our income tax return and other official correspondence. PAN card can also be used as a proof of identity. Okay, it is also considered as a proof of identity. Okay, so then we have computation of income tax. How do we compute income tax? As income tax is tax levied on income, it is necessary to know about the different sources of income. So let us suppose uh, there is one person who falls under the limit or he earns or she earns more than the limit that is set by the income tax department or maybe the budget, right? So there are five main heads of income. So the source of income is income from salary, income from
house and property. Then we have income from business or profession. Fourth one is income from capital gain. And fifth one from income from the other sources. So these are not specifically mentioned here, so they might be anything. Okay. So important considerations for computing the tax, income tax payable by a salaried employee. The total annual income or the gross total income is taken into account for calculating the tax payable according to the sections 80C, 80D, 80G, etc. of the Income Tax Act. Some deductions can be availed from the total annual income. The amount remaining after these deductions are made is called taxable income. Income tax is levied on this taxable income only. So yeah, this paragraph looks a bit complicated or maybe confusing, but it's not. Let's forget about these sections: ATC, ATD, ATG. We don't I don't have expertise in this law and all those things. Okay, so these are the sections of Income Tax Act. Okay, we just have to remember three numbers: ATC, ATD, ATG, in case, just in case, if the question is asked in the examination for that purpose. Okay, so let us suppose now, when do we calculate income tax और how do we calculate income tax, कैसे income tax calculate करते हैं? So for example, मैंने जो आपको पहले initially example दिया था कि let us suppose you have a limit of 100 rupees, मतलब 100 rupees is the limit that is set, and if somebody or someone earns above that limit, then that person has to pay the tax, right? So let's suppose somebody earns 120 rupees. Okay, so 120 rupees yearly, that will be called as total annual income. 120 rupees is total annual income, right? So अभी ये जो sections हमने देखे ना, ATC, ATD and ATG, so in sections के under there are several deductions are also made. For example, let us suppose that person spends 20 rupees for the education of children. Let us suppose, just we are just taking an example. Okay, this is not exact fear, nobody 20 रुपए में आज नोटबुक भी नहीं आती है, we are just taking example, right? So that person pays 20 rupees for the education of the children. Okay, so that is called as a deduction. So that will not be considered for the tax. मतलब even if that person has to pay the tax, he or she do not have to pay the tax on 120 rupees. He has to pay tax on 100 rupees only. मतलब वो जो 20 रुपए है वो डिडक्शन है, दैट इज एग्जम्प्टेड, मतलब उस पे टैक्स नहीं पे करना होता है. सो देयर आर several deductions. So ये deductions क्या होते हैं, we are going to learn that in a really deep manner. So see, every year the rules of computing income tax are changed, hence it is important to know the latest rules when actually calculating the payable tax payable. So अभी ये जो book है, that is not recently updated. Okay, so there are several budgets have come after this book. मतलब ये जो book जब print हुआ था उसके बाद में कम से कम if I'm not wrong 3 या फिर 4 budgets आ चुके हैं. So there may be several changes in the मेथड, मतलब जिसमें कि टैक्स पे किया जाता है. सो जो बुक में दिया है दैट इज नॉट एग्जैक्टली एप्लीकेबल राइट नाउ, सो वी हैव टू चेक द रेट्स एंड द डिडक्शंस एंड ऑल अदर क्राइटेरियाज फॉर द लेटेस्ट बजट. ओके, सो देन वी कैन कैलकुलेट टैक्सेस. मतलब ऐसा नहीं है कि लेट अस सपोज घर पर you have to calculate tax for your, let us suppose, father, brother or anyone, and you will say, oh come on, I will do it for you, I have chapter in my book and I will do according to this. So that is not going to help, because book mein jo hai, these are old, what we can say, old methods, right? So before calculating we need to know the latest methods. Okay, so jo, see, there is a little bit change, ज़्यादा change नहीं होता है. Okay, so there is very slight change, but we should know that change if we are going to calculate that. Okay, so no tax is levied upon a certain limit of taxable income. This is called the basic exemption limit. So the first line here is
no tax is levied upon certain limit of the taxable income. In our example, I had taken the limit as 100 rupees. So ये जो 100 rupees है, this is called as basic exemption limit. No tax is to be paid on this money. Okay. Next point we have is farmers income from agricultural produce is exempt from tax. मतलब मराठी, I think everybody understand Marathi here. So शेतकऱ्यांचं जे काही इन्कम आहे, सो त्या इन्कम वरती they don't have to pay tax. ॲग्रिकल्चर इन्कम वरती टॅक्स पे करावा लागत नाही. नॉट एट ऑल. म्हणजे त्यांना काही लिमिटही नाहीये अँड दे हॅव टू पे झिरो टॅक्स. Actually, we have to pay zero tax. Okay. So under section 80G of Income Tax Act, donations to the Prime Minister's Relief Fund, Chief Minister's Relief Fund are and certain other donations recognized to the institutions organizations are exempt from the taxes. Now see what we are learning here, deductions. होता है ना, मैंने बोला था ना कि कुछ deductions होते हैं. So which are the deductions that will be exempted from the tax? So let us suppose you earn XYZ money and you donate ABC money to the PM relief fund or CM relief fund, or you donate some money to the institution or organization. So जो कुछ भी money आप इन सब चीजों में donate करते हो, so that money is also exempted from the tax. उस पे भी हमें टैक्स नहीं पे करना होता है. Then we have under section 80D, installments of premium of health insurance are also exempt from the taxation. मतलब if we pay X amount of money for health insurance, हमारे इनकम में से अगर हम कुछ मनी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे करने के लिए यूज करते हैं, सो दैट मनी इज अगेन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो समझ रहा है ना, या फिर इज इट कंफ्यूजिंग? कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एनी ऑफ देम, you can ask me, I will repeat it. Okay, so because these things are very important, everyone should know this, right? सबको पता होना चाहिए ना. So these are the things that we use in real life. So the first thing is, जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स के इनकम पे कोई टैक्स हमें पे नहीं करना होता है. देन अंडर सेक्शन 80G, व्हाट, पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड, या फिर जो डोनेशंस होते हैं टू द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेस. अंडर सेक्शन 80D, installments paid to or installments of premium for health insurance are also exempt from the taxation. So these things we have learned. Now generally the maximum possible permissible deduction of various kinds of savings is under 80C is 1,50,000 rupees. So इसका मतलब क्या है अभी? So see, maximum permissible deduction, अभी ये permissible जो लिखा है ना, that is pessimistic. ओके, जस्ट वो जो ई और आर है वो इंटरचेंज हो गए, सो इट इज परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन. So let us suppose you are donating to PM relief fund, CM relief fund, or institution, or you are paying health insurance, or you are doing all the things of like donations and all, but you cannot donate all the money. Okay, ऐसा नहीं हो सकता. There has to be a limit. मतलब let us suppose you earn 3 lakh rupees per year. You earn 3 lakh rupees. Okay. So if let us suppose 3 lakh rupees is the money I have to pay tax on. 3 लाख रुपए मुझे XYZ टैक्स पे करना. एक्चुअल में 3 लाख इज नॉट द लिमिट. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ठीक है. सो let us suppose I donate 20,000 to the PM relief fund and I take premium of health insurance worth 10,000 rupees. So how many did I spend? I spent 30,000 rupees, right? जो कि exempt होता है taxes से, right? Now remaining money 2,70,000. So that is taxable income. Let us suppose that is taxable income. So I have to pay tax on that. इसमें कोई प्रॉब्लम? जो मैंने बताया अभी कि 20,000 जो था वो मैंने डोनेट कर दिया, 10,000 जो था मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ले लिया. सो 30,000 इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट
3 lakh rupees, but I have to pay tax on 2,70,000 rupees. Okay, now for example, I pay 1,50,000 to, I donate 1,50,000 to एन इंस्टीट्यूशन, मतलब मैं किसी इंस्टीट्यूशन को 1.5 लाख रुपए डोनेट कर देता हूं, एंड आई टेक प्रीमियम ऑफ 50,000 हेल्थ इंश्योरेंस. इट इज वेरी हाई, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. ओके, सो हाउ मच मनी डिड आई स्पेंड? 2 लाख, है ना. 1.5 लाख क्या कर दिया, डोनेट कर दिया. 50,000 हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दे दिया. सो 2 लाख रुपीज. नाउ मुझे कितने मनी पे टैक्स पे करना पड़ेगा? व्हाट इज माई टैक्सेबल इनकम नाउ? 3 लाख इन टोटल था. आउट ऑफ दैट 1.5 gone to the donation, 50 gone to the health insurance premium, remaining is 1 lakh. So is it 1 lakh? Is it 1 lakh students? 1 lakh पे मुझे टैक्स पे करना है? Yes, no, maybe? No, no. So how much is it, Kadambari? I think Kadambari has got my point. How much? Last point. Maximum permissible deduction of various kinds of savings under section 80C is 1,50,000 rupees. मतलब even if you donate 3 lakh out of 3 lakh, still you have to pay tax on 1.5 lakh. मतलब 1,50,000 पे आपको टैक्स भरना ही है. समझ रहे हो? मैक्सिमम अलाउड डिडक्शन कितना है? 1,50,000 का. So even if you have donated or you have spent 2 lakh rupees, but still you have to pay tax on 1.5 lakh. ठीक है? So इस तरीके से. So that is the fourth point. I hope you got this. Okay, so here are few more deductions from annual income according to various rules. So the first one is GPF or General Provident Fund, mutual fund, housing loan, only on principal, then public provident fund, tuition fees for 2 children, health insurance, LIP, life insurance policy, National Savings Certificate Scheme, NSC, investment in the post department for 5 years, and Sukanya Samruddhi scheme for girls in 1.5 uh, 1.5 lakh. ठीक है. सो ये सब चीजें जो है, दीज आर अगेन ओल्ड थिंग्स. अभी जो नया बजट है उसमें कुछ चीजें इसमें ऐड भी की रहेगी और कुछ चीजें जो है वो एक्सक्लूड भी की रहेगी. राइट. सो यू डोंट हैव टू टेक कंसिडरेशन इनटू, मतलब यही चीज है. इट इज नॉट लाइक दैट. I hope you are getting my point. So the tax rates according to age of taxpayer are fixed in each year's budget. Samples of tables showing tax rates for different income slabs are given below. So now see again, मतलब जो taxes पे करना होता है, that depends on the income as well as on your age as well. ठीक है. मतलब let us suppose you are from 0 to 20, 20 साल की उम्र. So you may be having, I don't think you may be having anything, but I'm just taking an example. ठीक है. So there will be different rate. Then 20 to 60. So these people have to pay different taxes, and the people above 60 years, मतलब जो 60 साल से ज्यादा वाले लोग हैं, they will be having different income taxes to pay. मतलब it is not same for everyone. My point is, ठीक है. So this table 1, this is for individuals up to the age of 60 years. मतलब जो 60 साल तक के लोग हैं उनके लिए ये टेबल एप्लीकेबल होता है. अगेन दिस इज द ओल्ड टेबल. There might be changes in the percentages, but the calculations will be similar. Okay, so see, फर्स्ट कॉलम में जो है वो टैक्सेबल इनकम स्लैब है इन रुपीज. उसके बाद में जो है वो इनकम टैक्स, कितना इनकम टैक्स पे करना है. उसके बाद में होता है एक एजुकेशन सेस नाम का, एंड देन वी हैव सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस. ओके, सो ये दो जो सेस होते हैं, यू कैन गूगल इट, सो यू विल नो मोर अबाउट दिस. ओके, so let us suppose
the income is up to 2,50,000 rupees. Okay, so the income is up to 2,50,000 rupees. So there is no income tax, nil here. You don't have to pay any income tax. You don't have to pay education cess. You don't have to pay secondary and higher secondary cess. ठीक है. So this is the limit I was talking about. जो मैंने 100 rupees का example लिया था ना. So this is 2,50,000 for the age of people up to 60 years. ठीक है. Now let us suppose a person earns money in between 2,50,000 and 01 rupees to 5 lakh rupees. मतलब 2.5 लाख 1 रुपीस से लेके 5 लाख तक अगर कोई इंसान मनी अर्न करता है, so he or she has to pay 5% tax on taxable income minus 2,50,000. Now this is really important. See, 5% पे करना है. So what does that means? Let us suppose a person earns 4 lakh rupees. ठीक है. So 4 lakh rupees है, that means वो इस slab में आता है. So this kind of examples will be there in your exam also. ठीक है. So you have to understand it very what we say, you need to you need to have very clear calculations of these things. ठीक है. सो समझने की कोशिश करो. 5% पे करना है मतलब कि नाउ लेट अस सपोज 4 लाख रुपीज इज द इनकम ऑफ दैट पर्सन. क्लियरली ही हैज टू पे द टैक्स. ठीक है. सो 5% पे करना है मतलब टेल मी हाउ मच इज द 5% ऑफ 4 लाख. इट्स आई थिंक हाउ मच 20,000 इज इट 20,000. Yes, 5% of 4 lakh is 20,000. So that person has to pay 20,000 rupees tax. Yes, no? Yes, no? Yeah, if you are not sure, you can simply put no. No. Okay. Yeah, you are not sure. That's absolutely fine. You will now understand. See, नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है? On taxable income minus 2,50,000. Now, taxable income क्या होता है? Taxable income मतलब the income the income excluding deductions. जो हमने बात की थी ना डिडक्शंस की कि पीएफ में इतना है, हेल्थ इंश्योरेंस में इतना है, डोनेट इतना किया है. सो इन सब चीजों को हटा के जो बचता है दैट इज टैक्सेबल इनकम. ओके, अभी टैक्सेबल इनकम समझ में आया. नाउ टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000 रुपीज जो बेसिक है. अभी हाउ मच इज द बेसिक हियर? इट इज 2,50,000 रुपीज. उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना है किसी को भी. राइट. 2,50,000 is the what we say uh, exemption limit, right? So let us suppose for an person who is earning 4 lakh rupees, let us suppose taxable income is 3,50,000. अभी 3,50,000 कैसे आया समझ में आया? बिकॉज वो जो 50,000 था बाकी का, लेट अस सपोज दैट हैज वेंट इनटू पीएफ और इंश्योरेंस और XYZ स्कीम्स, डिडक्शंस में चला गया. 50,000 रुपीज डिडक्शंस में चला गया. सो 4 लैक्स जो अर्न कर रहा था उसमें से अगर 50,000 डिडक्शंस में चला गया, सो हाउ मच इज रिमेनिंग? इट इज 3,50,000. ठीक है. सो अभी इस 3,50,000 में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2,50,000. नाउ हाउ मच इज रिमेनिंग? टेल मी. 3.5 लाख में से 2.5 लाख अगर निकाल दोगे तो 1 लाख बचेगा. सो दैट इज द इनकम वी हैव टू कैलकुलेट टैक्स ऑन. अभी इसका 5% कितना होगा? व्हाट इज 5% ऑफ दिस? 5,000. So if a person is earning 4 lakh rupees per year, he or she has to earn how much income tax, students? How much? 5,000 rupees. Do you understand कि कैसे हमने कैलकुलेट किया इसे? See, I will repeat it again. ठीक है. 4 लाख रुपए जो है
वो उसका इनकम था, सो दैट पर्सन कम्स अंडर दिस स्लैब। पहले हमें क्या करना है कि वो किस स्लैब में fall करता है, that we have to see. So let us suppose if a person earns 6 lakh rupees, so this person will not be in this slab, that person will be in this slab, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो कि 12 लाख कमाता है, so that will be in this slab. So we first of all we have to check the slab कि किस slab में वो that person falls into, ठीक है। सो जो हम बात कर रहे थे 4 लाख वाले की, सो दैट पर्सन फॉल्स इनटू दिस स्लैब। सो इस स्लैब के लिए 5% टैक्स है ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000 रुपीज। अभी टैक्सेबल इनकम क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, द इनकम एक्सक्लूडिंग डिडक्शंस, मतलब जो इनकम है उसमें से डिडक्शंस को निकाल दो, सो दैट इज टैक्सेबल इनकम। अभी इस टैक्सेबल इनकम में से भी हमें क्या करना है, जो बेसिक लिमिट थी या फिर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी, दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। मतलब मैंने 50,000 सब्ट्रैक्ट किए 4 लाख में से, सो इट इज 3,50,000। 3,50,000 में से भी मुझे 2,50,000 सब्ट्रैक्ट करने हैं, so that I will get amount on which I have to pay the tax. So 1 lakh rupees is that 1 lakh rupees में से 5% यानी कि 5,000 रुपए। Now education cess, so education cess is 2% of income tax. So अभी हमें क्या करना है, 2% ऑफ इनकम टैक्स, मतलब 1 लाख का 2% नहीं निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट 2% ऑफ 5,000। अभी फाइंड आउट 2% ऑफ 5,000, कैन यू डू दैट? 100 रुपीज, यस, ओके, ओके, सो दैट इज इट। एंड 1% ऑफ इनकम टैक्स, हाउ मच इट इज? 50 रुपीज। So how much is the total tax that has to be paid, including income tax, including education cess, and including secondary and higher education, secondary and higher secondary education cess, सब मिला के कितना टैक्स पे करना है? See, income tax is 5,000 plus 2% of the income tax, that is 100 rupees, plus 1% of the income tax, यानी कि 5,150 rupees. So that is the final tax that person has to pay. Clear? ठीक है। Now let's see next slab। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लैब में हम देखते हैं। सो इस स्लैब में देखिए, लेट अस सपोज इनकम इज फ्रॉम 5,01 रुपीज टू 10 लाख रुपीज, मतलब 5,01 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का अगर इनकम है। सो सी, आर एस 12,500 प्लस 20% ऑन इनकम टैक्स माइनस 5 लाख, और ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख। ओके, so for your convenience what I will do is, let us suppose that person has income of 9 लाख रुपीज, ठीक है, इज 9 लाख रुपीज, राइट। सो अभी 9 लाख रुपीज में से उसका जो 1 लाख रुपीज है वो डिडक्शन है। सो टैक्सेबल इनकम कितना हुआ स्टूडेंट्स? 9 लाख में से 1 लाख डिडक्शन है। नो, इट्स नॉट 4 लाख, इट्स 8 लाख। या मैं सिर्फ टैक्सेबल इनकम बोल रहा हूँ, नॉट, या इट्स 8 लाख, राइट। सो अभी इस 8 लाख में से भी हाउ मच आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे दिया है ना, ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख। सो 8 लाख माइनस 5 लाख इज 8 लाख माइनस 5 लाख इज 3 लाख, राइट। नाउ अभी इस 3 लाख पे हमें टैक्स पे करना है। हाउ डू वी डू दैट? इनकम टैक्स कितना रहेगा? सी स्टूडेंट्स, 12,500 दैट इज फिक्स्ड, मतलब ये तो पे करना ही है, प्लस 20,000, सॉरी प्लस 20%। अभी 3 लाख का 20% निकालो, 6,000, यस। 3 लाख का 20% 6,000 रहेगा, या, ओके। सो 12,500 दैट इज फिक्स्ड,
ये तो इस स्लैब वाला जो आदमी है उसको ये तो 12,500 फिक्स ही पे करना है प्लस 20% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख। तो वो कितना आया हमारा 6,000 आया। सो 12,500 प्लस 6,000 कितना हुआ? Oh, is it 60,000? Yeah, it's 60,000, I guess. Yeah, yeah. Sorry, my bad. It's 60,000. All right. So 72,500. That is the tax. That is what? That is income tax. Education says will be calculated on what basis? On this tax itself. ठीक है, तो 7250 plus 7250 is 40,500. 40,500, or is it four, no, it's 1450, right? Education says कितना रहेगा students? 1450. Correct me if I'm wrong. ठीक है, 72,500 का 2% होता है 1450. You can calculate it as well. Yeah. So it is education cess, right? So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. See, 72,500 is the income tax, 1450 is the education cess, and 725, yeah, 725, I think, right? Sorry, what is happening? Excuse me. Yeah. So 725. So add them up. सब लोग इन सबको add कर दो. So that is the tax that needs to be paid. Yeah, 74675. So if a person earns 9 lakh rupees per year, and if he or she has deductions of 1 lakh rupees, then that person has to pay 74,675 rupees tax as per this table, and provided the person is below 60 years of age, 60 साल के नीचे का वो इंसान होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि ये जो लास्ट स्लैब है यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दैट, you can calculate that, I hope you can, right? But still we can do that in the next class. So yeah, I hope it was अंडरस्टैंडेबल, सबको समझ में आया होगा, सो इट्स गुड। अगर नहीं तो फिर से हम एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड वी हैव टू सॉल्व एग्जांपल्स लाइक दिस ओनली स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ऐसे ही एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मे बी next week or the week after next week. Till then, bye bye, take care, you can leave the class, bye.